Some of the more exotic stuff now. Ahmad Raza, who we've had on before, I think, is a young lad from Melbourne who's a talented player. A couple of sweep shots, a hard hit sweep that he hits along the ground, and then a slug sweep, and he just gets his leg out of the way. He's got, I don't know whether we can see that again, but just to get the elevation on the second one, he slightly gets that front foot out of the way and can really loft it over the top. It's good position stuff. It's a very good position, and obviously he's picking the length really well, because that kind of shot there is so important to be able to pick the length, because it's a shot that I sort of steered away from when DRS came in, because if you made some sort of a boo-boo with anything hitting your front pad, she gone. Name actually, but he's Raza Saeed's son. Looks like he's in the front room here with a tennis ball. So big front room. Shot. Amazing shots actually. Watch this pull shot coming up. Cut shot. Bit of Andrew Strauss in that cut shot. Look at that. That's very corny set up. Very corny set up. Yeah. The other thing that's nice is just, the trigger he's got already seems repeatable, and he's not blocking himself off at any point. He can access the ball, which is exactly what Stokes is trying to do. So when we're going to be doing this from time to time on a Saturday, we're looking at videos, we see so many times, and they're terrific, boys and girls on the front foot driving. Now what we're seeing here is back foot. हेलो क्रिकनट, आज हम आपको एक मुलाकात कराने लाए हैं फ्यूचर के राइजिंग स्टार से। बहुत सॉलिडली वो खेल रहे हैं, और अगर इसी तरह वो खेलते रहे तो मुझे लगता है कि एक वक्त में वो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलेंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे ऑस्ट्रेलिया के मुल्क में। तो हम जल्दी से आपको उनके पास लेके चलते हैं, ज्यादा बातें उनके साथ करते हैं कि उनका नाम है अहमद रजा, 11 साल के लड़का है, और इस वक्त हमारे साथ है उनके वालिद साहब भी है। तो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी जी बिल्कुल, शुक्र अल्लाह का, आप भी ठीक हैं। एंड हाउ इज अहमद? अहमद, आर यू ओके? Yes, I'm very good. How are you? Right, and we are all okay, thank you. So how about how did you get into the cricket? Is it due to your parents, father? So I started off playing inside my house when I was really young. I had this little green plastic bat, and every day when my dad would come home from work, I would play with him, and that's where the passion sort of grew from, because I have a lot of fun playing cricket and I really enjoy it. Right, good. So did you see your dad playing before, or you just pick it up from Australia, because everybody plays cricket in Australia too? I've seen my dad play before, but I guess cricket is something that we both have passions for. My dad, he sort of taught me the basics in cricket, yeah, and from there on, there's obviously coaches, mentors that can help you with your development. Right, good. So the question for dad, आबिद साहब, आपको कब लगा कि आपका बच्चा, यानी आपने इसको कोचिंग की, आपके और भी बच्चे हैं या सिर्फ यही अभी खेल रहे हैं? कुछ और बताएं। सर जी माशाल्लाह, मेरे ना 4 बच्चे हैं और अहमद सबसे बड़ा है, और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब एक टैलेंट जो है ना, शुरू से मैं जब लॉ फर्म थी लाहौर में, तो वहां से ना जब आना 10 बजे रात को घर, तो फिर इसको ना थ्रो डाउन्स करता था प्लास्टिक बॉल, तो ये खेलता था, तो अच्छा लगता था, इंटरेस्ट था इसका। फिर हम जब माइग्रेट करके ऑस्ट्रेलिया में आए तो यहाँ पे एक माहौल ही आपको ऐसा मिला, आपके हर सबर्ब में ग्राउंड्स हैं, आपको नेट फैसिलिटीज अवेलेबल है, कोचेस बड़े जबरदस्त अवेलेबल हैं, तो बाकी इसका पैशन और हार्डवर्क जो है ना वो ही है, जितना ये करता जाएगा उतना ही आगे जाता जाएगा। ठीक है, ओके। तो इससे मैंने देखा अहमद की टेक्निक बड़ी सॉलिड है, जो कि बहुत कम है आजकल। हमारे इतने इंटरनेशनल प्लेयर्स की टेक्निक भी इतनी अच्छी नहीं होती सॉलिडली। आप ये टेक्निक पे बहुत जोर है, ये कोचिंग से इसको आया है या नेचुरली है, या आपने इसको पहले कोचिंग किया है टेक्निकली? सर जी मेरा थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन यही है कि मैं इसको सिर्फ ये चीज बताता हूँ कि बेटा, ये मुझसे पूछता है बाबा एम आई लुकिंग करेक्ट, टेक्निकली करेक्ट, मैं इसको बता देता हूँ हाँ बेटा आप ठीक लग रहे हो। यानी इसके अंदर एक चीज इन बिल्ड है
कि आया जो मैं शॉट खेल रहा हूं मैं परफेक्ट लग रहा हूं उसमें कि नहीं लग रहा। और इसको ये मेरे पे ट्रस्ट है कि भाई तुम मैं इसको बता देता हूं कि भाई यहाँ पे आप गलत कर रहे हो, यहाँ ठीक कर रहे हो। फिर ऑस्ट्रेलिया में आपको कोचेस जो है, कोचेस के बगैर कभी भी कोई प्लेयर नहीं तैयार हुआ, ठीक है ना। कोचेस हमारी गुड लक है, इतने जबरदस्त कोचेस हैं यहाँ पे, तो वो जब भी आप जाते हो कुछ ना कुछ आप लेके आते हो। ये तो उस्तादों से आप कोई ना कोई छोटी सी भी चीज ले आते हो ना, तो वो आगे आपको फ्यूचर में बहुत काम आती है। तो ये माशाल्लाह उसको पिक करता है बड़ी जल्दी, बाकी वीडियोस देखता है, मैचेस देखता है, तो उससे बड़ा फायदा हो जाता है। एक बात आपने बहुत अच्छी बताई, जो हमारे वेस्टर्न में हम लोग रहते हैं, हमारे बच्चे जो इतनी बातें नहीं सुनते। जैसे हम रियली इम्प्रेस्ड टू हियर कि आपने कहा कि बेटे को मैं जो समझाता हूँ, कोचिंग करता हूँ, तो ये समझता है, सुनता है, जो कि हमारे इधर बहुत कम ऐसा कल्चर मिलता है। इवन माय ओन चाइल्ड भी ऐसे नहीं करेगा, उसको कोचिंग करूँ तो वो कहता है नो, मैंने मुझे खुद आता है। बट एनीवे, तो who's your favorite player, Ahmed? Who do you watch currently or Right now, from a mentally tough point of view, I watch Steve Smith because he's mentally very tough, and that's why I like him. But in terms of technically correct players, there's a lot to choose from. But some of my favorites are Manus Labuschagne, Kane Williamson, Babar Azam, Virat Kohli, and Joe Root. right? Okay. So, and you are left-handed. Does it make any difference? Like you want to have your favorite player as a left-hander? Do you watch any left-hander to get your technique right? Yeah, there are three in particular that I do watch. Brian Lara Kumasangakara and JP Duminy. I've seen a lot of their innings, and they just look so technically correct. It's amazing. Yeah, I'm very impressed your choice of players. They are all are great players and very, very good, technically very good and a great player. So that's very good of you. So, और आबिद भाई आप बताइए, ये हमारे बड़ी क्या कहते हैं मसरूफ लाइफ होती है ऑस्ट्रेलिया में या यूरोपियन कंट्रीज में भी, तो आप टाइम निकालते हैं, इनको लेके जाना होता है क्रिकेट ग्राउंड्स में और कोचिंग पे भी लेके जाते हैं। हाउ डिड यू मैनेज दिस, ये बताएंगे और भी? सर बेसिकली अगर आप देखे जाए ना तो बिजी लाइफ तो होती है, लेकिन देर आर टू वेज ऑफ स्पेंडिंग लाइफ। आप या तो ह्यूमन डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करें या फिर आप पैसे कमा लें, दो आपके पास चीजें हैं। मेरे नजदीक ये है कि मैं अपनी औलाद को जितना जितना जो भी इनका पैशन है मैं इनको बैक करूंगा जहां तक हो सकेगा। मतलब मेरी बेटी भी क्रिकेट खेलना चाहती है, आई वुड लव टू कोच हर, और मैं उसको जहां तक वो जाना चाहती है मैं लेके जाऊंगा। शी स्टिल 5। तो बाकी ये है कि मैं अपने बच्चों को जहां तक हो सकेगा सपोर्ट करूंगा। यानी ये मेरी एज ए डैड ड्यूटी है कि इसको सपोर्ट करना, जहां तक इसका है काम, ग्राउंड में खेलना इसका काम है, अपने टैलेंट को शो करना इसका काम है, वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, तो आपने पहले क्या किया इसको, बेटे को लेके? सबसे पहले आप स्कूल में खेले या अपना ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा स्ट्रक्चर बताएंगे कैसे होता है? जी बिल्कुल, मैं एक्सप्लेन करता हूं सर। यहाँ पे एक क्लब क्रिकेट, क्लब के बाद एसोसिएशन क्रिकेट, एसोसिएशन के बाद यहाँ पे यूथ प्रीमियर लीग आती है, फिर उसके बाद विक्टोरियन डेवलपमेंट स्क्वाड आती है स्टेट लेवल, और फिर ऑस्ट्रेलिया में आप जाते हो, ऑस्ट्रेलिया ए देन ऑस्ट्रेलिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एसोसिएशन क्रिकेट में 9 साल का ये सिलेक्ट हो गया था। तो उसमें इसने माशाल्लाह अपनी एसोसिएशन में लेग स्पिन भी है, ये राइट आर्म लेग स्पिनर है। तो इसने सबसे ज्यादा विकेटें ली थी, रन इसने इतने अच्छे नहीं बनाए थे। फिर सेकंड ईयर ये उससे अगले ग्रेड में सिलेक्ट हुआ, उसमें भी माशाल्लाह इसने अपनी एसोसिएशन के लिए सबसे ज्यादा विकेटें ली और सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर था। तो ये अल्लाह का शुक्र है, अच्छी अचीवमेंट थी। फिर उसके बाद ये है कि एसोसिएशन के बाद अब हमारा जो नॉर्थ का जो मेलबर्न का एरिया है ना सर, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह दे लव टू सी अहमद। तो इसको अल्लाह ने एक इज्जत दी है, इसका नाम है। तो अब इसका हार्डवर्क है, जितना ये करेगा उतना ही, क्योंकि क्रिकेट में इंसान
सारी उम्र स्टूडेंट ही रहता है, उसमें कभी आप टीचर नहीं बन सकते, उस्ताद नहीं बन सकते। तो जब तक सीखता रहेगा चलता रहेगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं ये एसोसिएशन पहले ये अंडर 9 ईयर ओल्ड क्रिकेट खेले हैं, क्लब क्रिकेट, और उसके बाद पिक्ड अप बाय एसोसिएशन। तो ये वहां पे इनको कोचिंग मिल रही है कि इनकी कोचिंग में इनकी टेक्निक बड़ी सॉलिड है, द वे ही मूव्स फॉरवर्ड एंड बैक, जो कि बहुत कम मैं लोगों में देखता हूँ। तो ये जो कोचिंग भी सेपरेट हो रही है इनकी। सर कोचिंग का भी रोल, कोचिंग का देखिए मेन रोल है। अब इसको एक स्कूल में एडमिशन, यहाँ पे भी इंग्लैंड में भी आपके स्पोर्ट्स स्कूल्स होंगे, यहाँ पे भी स्पोर्ट्स स्कूल है जिसमें अगर कोई शाइनिंग प्लेयर्स है ना, वो उनको ट्रायल बेस्ड एडमिशन देते हैं, फिर गवर्नमेंट उन पे इन्वेस्ट करती है, हाई प्रोफाइल कोचेस हायर करती है। अभी तक जो इसकी टेक्निक है ना, वो तो ये है कि क्लब के जो वॉलंटियर कोचेस, या एक मैंने विंटर वॉरियर एकेडमी एक ज्वाइन करवाई थी, विंटर वॉरियर प्रोग्राम था उनका, वो हाफ एन आवर, उसमें इसने काफी कुछ लर्न किया। दूसरा ये है कि अब आप देखें ना, रात का टाइम होता है हमारे इधर, और आपके इंग्लैंड में टेस्ट मैच शुरू होता था, तो ये सारा ही सारी रात बैठ के पूरा 90 ओवर टेस्ट मैच देखता रहता था, बॉल टू बॉल, जो कि उससे बहुत हेल्प मिलती है डेवलपमेंट के लिए। वो बड़ी डेवलपमेंट होती है उससे, वो एक अलग होमवर्क है। एक प्रैक्टिस से लेके, मैं समझता हूँ प्रैक्टिस वो आप करते हैं, जितना आप बड़े प्लेयर्स को खेलते हुए देख के सीखते हैं ना, वो एक अलग चीज है। मैं इसलिए पूछना चाह रहा था कि आपका बेचा जिस तरह से क्रिकेट सीख रहा है, ताकि हमारे पाकिस्तान में भी लोग देख रहे होंगे, तो उनके लिए हो कि वो स्ट्रक्चर को और इस स्ट्रक्चर को अगर वो कंपेयर करना चाहें, तो इसलिए मैंने सवाल पूछा था कि यहाँ का स्ट्रक्चर कैसा है और वो पाकिस्तान के स्ट्रक्चर से कंपेयर करेंगे, तो क्या सर, डिफरेंस पाया आपने? हाँ, यहाँ का जो स्ट्रक्चर है ना, यहाँ का स्ट्रक्चर बहुत क्लियर है। आपने क्लब क्रिकेट के बाद एसोसिएशन क्रिकेट में गए, एसोसिएशन में आपने परफॉर्म किया, तो आप यूथ प्रीमियर लीग में चले गए, उधर आप परफॉर्म करेंगे तो आप डेवलपमेंट, स्टेट डेवलपमेंट स्क्वाड में चले जाएंगे अपने एज ग्रुप के, वहां पे आप परफॉर्म करेंगे तो फिर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए चले जाएंगे। ये है पाथवे सिस्टम। उसमें आपको कोचेस बड़े जबरदस्त मिलते हैं, आप जाते हैं, जिसको लर्न करने के पैशन होता है ना, वो कोचेस उसको फिर अपने पास ले आते हैं, उसके अंदर जो कमी बेशी होती है वो उसको करेक्ट करवाते हैं, और ये सिस्टम है यहाँ पे इनकी बेसिकली। सिलेक्शन का मसला नहीं होता? जैसे हमारे पाकिस्तान में तो बहुत कई लोग सिलेक्ट नहीं होते, कई सिलेक्ट होते हैं, ऑलवेज नहीं कंट्रोवर्सी है, होती है। ऐसा तो कोई इशू नहीं है, ऐसा ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अगर आप अच्छे प्लेयर हो, इधर ये एक परसेप्शन बनी हुई है कि जी आप मतलब रेसिज्म या ऐसी कोई कोई ऐसी चीज नहीं है ऑस्ट्रेलिया में। आप अच्छे प्लेयर हो, डजेंट मैटर आप जहां से भी बिलोंग करते हो, यू विल प्ले फॉर ऑस्ट्रेलिया, दैट्स इट। राइट राइट राइट, ओके। हाँ, चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हर बच्चे को, हर आदमी को इधर चांस मिलता है, अगर अच्छा हो तो दिस इज गुड। So, what's your, Ahmed, what would you like to do when you grow up? You're only 11-year-old, and what's your plan? And I mean, how big a player you want to be? How good? So when I grow up, obviously I want to be a professional cricket player. I still have options along with batting, because when you go to a higher level, if you have as many options from that you can choose from, for example, batting, bowling, I even do keeping. Yep. Then that gives you more of a chance of getting into the team. The first goal you should have is to get into the team for one of your skills. Then opportunities will come for maybe another skill that you would like to work on and would like to show everyone that you're capable of. Right. Okay, tell me something about your leg spin. Are you a left-arm spinner, left-arm leg spinner, or right-arm leg spinner? I'm a right arm leg spinner. Last season I got I think 37 or 38 wickets Right. for the whole season. I And Are I you think it would be, we are not sure, but it would be
the most wickets for a 10, 11-year-old kid. Okay. He was So who at- inspired you when you got the best leg spinner ever in, from Australia? So who inspired you for leg spin? Is it naturally, or you try to be leg spinner? So uh, it started off from my dad. He thought that I would be good at leg spin. He just taught me the basics, like an action, how you grip the ball for a leg break. And then that's where I started, and I've been developing my action, my release points, and all of those things. Okay. It's quite lucky to have a dad who knows about leg spin and cricket as well. Okay. So what do you do with leg spinner? Do you bowl googlies, flippers? So I can bowl wrong-uns and flippers. But what I want to focus on right now is to get the perfect leg breaks, like pitch them where I want them to, have the exact line. Because I feel like I'm only 11 right now, so if I can get my stock ball, my main ball, which is obviously going to be a leg break, if I can get that to as close as perfection or near perfection as possible, then I can start focusing on my other ones as well. I still do bowl wrong-uns and flippers just to keep practicing, but my main focus is perfecting my leg break as much as possible right now. And moving on. What do you like the most, batting or bowling? I like both, but I would say batting would be my favorite out of those two. Although I do like bowling very much, it's really good because you have to try and outsmart a batsman as a leg spinner. Um, yeah, but batting just brings like a new challenge because there's so many things that come into play, and one of them could be maybe the scoreboard. If you have a big chase in front of you, maybe you're losing wickets at the other end. How do you go about it? So there are a lot of things that I enjoy about both, but I would say batting. I don't. I used to love batting as well, even though I was a bowler mostly. But yeah, Abid साहब आपका आपसे सवाल है वन एक बड़ी अच्छी बात कि अहमद ने कोचिंग भी की हुई है मीन ही इज ए सर्टिफाइड कोच एज वेल तो वो कैसे आपके ज़हन में आया कि कोचिंग भी इसको होनी चाहिए बेसिकली वो मेरे ज़हन में नहीं आया वो अहमद के ज़हन में आया आप इसका जवाब अहमद देगा आपको Okay, Ahmad, you tell us then how did So you become a coach? What I wanted to do was see how what coaches would want to see in a good player that they would like to have in their team if they were to select one. And that's why I wanted to go to that course. My dad and I went because we both have a passion for everything in cricket, but I also wanted to see what a coach wants in a good player and see where I am right now, what I need to improve, and what I'm doing well, and what I need to keep going on. Right. Have you noticed any difference, Ahmed, from from your age, other children from your age, and you? What difference you found? Do you do some extra work, or they don't do it? How you become more successful than the others? Have you noticed anything, or you want advice to people like your age? I think everyone has the same talent. It's just about how you use it mentally. If you can work out a way with your mind of how you're going to perform in any aspect of the game, because I believe everyone
has the talent. They all have the ability. They just have to find a way. They have to find the ability within themselves and use it as best as possible. Right, good. So how about अबिद वैसे तो मुझे तो पता ही है जैसे होता है, लेकिन हमारे देखने वालों को कि how is continuing his own studies, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा. How good is in his studies, जो कि वो भी बहुत इम्पोर्टेंट सर जी अभी तक तो माशाल्लाह आपको पता है आप इंग्लैंड में रहते हैं यहाँ पे स्कूल कैप्टन होते हैं जो होल स्कूल कैप्टन होता है तो माशाल्लाह एपिंग व्यूज प्राइमरी स्कूल में ना 1400 प्लस स्टूडेंट्स हैं अहमद स्कूल कैप्टन है उन 1400 का तो वो जो बेस्ट स्टूडेंट होते हैं उसकी सिलेक्शन करते हैं एज ए कैप्टन ऑफ द स्कूल तो बाकी नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ये जा रहा है रोविल स्पोर्ट्स एकेडमी जो कि स्कूल है बेस्ट स्पोर्ट्स स्कूल इन विक्टोरिया है वो उसमें क्या होता है कि वो स्कूल का स्ट्रक्चर ऐसे डेवलप किया हुआ है कि वहां पे जो वो एथलीट्स और जो भी जिस भी स्पोर्ट्स के बच्चे हायर करते हैं ना सर वो एडमिशन देते हैं तो वो उनका स्टडी और गेम प्लान डिसाइड करते हैं कि उनका क्लैश नहीं हो ना उनकी स्टडी उनकी गेम से क्लैश हो ना उनकी गेम उनकी स्टडी से क्लैश हो तो ये बड़ा अच्छा लकी टू बी हियर इन मेलबर्न तो इसका जो बेस्ट स्पोर्ट्स स्कूल ऑफ विक्टोरिया हमारी स्टेट का उसमें इसका एडमिशन हुआ है तो ईयर 7 से इंशाल्लाह ये फरवरी से ज्वाइन करेगा और वो बाकी हार्डवर्क है जितना हम करेंगे उतना ही इंशाल्लाह आगे जाएगा ये हार्डवर्क जरूरी है So Ahmad, up to you now. What would you like changes in? Is there anything making your life a little bit difficult understanding cricket, or what would you like things to be changed? Is there anything? No, I think so far my life's been just the way how I've wanted it or how I've liked it. I wouldn't change a thing. Yeah. I meant in learning, are you finding everything quite easy to understand, or are you finding a little bit difficult? Anything? No, not really finding it difficult. As long as I can understand correctly, I can get feedback on how I can improve. That's all I think you would need. Okay. अच्छा अहमद साहब मैंने देखी तस्वीर आपने ना it goes to every time बहुत से टेस्ट मैचेस में स्टीव स्मिथ के साथ और बहुत से प्लेयर्स के साथ so you actually go to watch cricket in live grounds as well ये सही बात है सर जी मेलबर्न की जितने भी मैचेस होते हैं ना वो चाहे बिग बैश के हों या चाहे टेस्ट मैच हो वनडे हो जो मर्जी टीम आई हो वो हम देखने जाते हैं तो वो हम ऑलरेडी प्लान करते हैं वो जो 8, 10, 15 जो बीबीएल के मैचेस हैं या इंटरनेशनल मैचेस हैं वनडे T20 वो सब मैचेस हम देखते हैं विद फैमिली जाके देखते हैं राइट तो कल्चर ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट का कल्चर बहुत अच्छा है वैसे ये सही बात है हमारे भी कुछ जानने वाले जो लोग होते हैं ऑस्ट्रेलिया में वो कहते हैं कि इट्स अ बिग गेम क्रिकेट इंग्लैंड में इतनी बड़ी नहीं है इवन दो यहाँ से ये स्टार्ट हुई है पर इंग्लैंड में इतनी बड़ी स्पोर्ट नहीं है जितनी बड़ी ऑस्ट्रेलिया में है तो ये पाकिस्तान के जब मैच होते हैं तो उसमें राइट आई थिंक आई शुड आस्क Ahmad who would you support if it's between Pakistan and Australia Australia it's because I live here I'm growing up here we eat food here because Australia has provided a lot of things for us because we're living here and doing everything here so we should support Australia like it's supporting us right and how about you Ahmed what आप क्या कहते हैं मैं देखिए जी मैं तो हमेशा अपने बेटे को हमारा जो एज ए ओवरसीज पाकिस्तानी ना सर मैं ये बिलीव करता हूँ मेरा ये बिलीव है कि जो जिस कंट्री में भी हम जाते हैं जब स्पोर्ट्स को सपोर्ट करना है तो मैं पहले अपने बच्चों को बताता हूँ कि आप ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करो मैं पाकिस्तान को और उसके अलावा क्या करते हैं आपने ये पूरा क्वेश्चन नहीं सुना जब ऑस्ट्रेलिया के अलावा कोई भी मैच होगा तो अहमद आप किसको सपोर्ट करोगे पाकिस्तान अगर पाकिस्तान का मैच होगा अगेंस्ट एनी टीम
other than Australia, then I'd support Pakistan. But if it's against Australia, Australia always. तो क्या होता है अगर let's say अगर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है, you supporting Australia or dad supporting Pakistan, is this right? हाँ जी, मैं पाकिस्तान को कर रहा हूँ, ये ऑस्ट्रेलिया को करेगा सपोर्ट। ठीक 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 ठीक, सही है। तो अब आगे क्या इरादे हैं आपके, मतलब अहमद, what's you gonna do? You going in a bigger school now? You gonna play with bigger children? I'm not really worried about playing bigger children, because what I like to keep in mind, and this was in Michael Clark's biography as well, or autobiography, that you're not facing, let's say, for example, if you're playing international cricket and you're in the nets, you're not facing Mitchell Starc, you're facing the ball. It's just that he's going to be the one that's going to control how he bowls the ball, but you're going to face the ball, not the person who's bowling it. Right. Okay. And Abid Sahab, tell us something about. मैंने देखा एक प्रोग्राम्स में आपने कहा he was quite young and he played in 16-year-old group. उसका क्या? वो एक जी यहाँ पे है शॉन ब्राउन एकेडमी, तो ये उन्होंने इसको एज ए गेस्ट प्लेयर इनवाइट किया। उन्होंने कहा कि आपने ये नहीं बताना कि ये 10 ईयर ओल्ड है, अदरवाइज फिर ना वो कहेंगे कि जी आप छोटे छोटे बच्चों को ले आए हैं, तो ये है। तो उस मैच में उन्होंने कहा कि हमने आपको ओपनिंग करनी है, करानी है, तो आपने दूसरा या आपको बॉलिंग नहीं मिलेगी। तो इसने कहा कि मैं ना कीपिंग कर लेता हूं। तो न्यूजीलैंड की टीम ने पहले बैटिंग की, इसने 40 ओवर कीपिंग की सर, ठीक है, 50 ओवर गेम थी, कीपिंग की पूरी गेम। जैसे आपके पीछे लॉर्ड्स की ग्राउंड है ना सर, पूरी इसी तरह की मेन ग्राउंड प्रीमियर क्रिकेट की, उस पे 50 ओवर कीपिंग करने के बाद ये ओपनिंग बैटिंग करने गया। और इसने फिर, मैंने आपको वो भी वीडियो सेंड की थी, इसने उनको उनके अगेंस्ट वो रिटायर कर देते थे, इसने 31 रन बनाए और रिटायर होके आया। और वो न्यूजीलैंड की एसोसिएशन की अंडर 16 की टीम थी और ये 10 ईयर ओल्ड था उस वक्त। तो और वो नए बॉल को 115 से 20 के दरमियान स्पीड थी। बॉलर की हाइट थी 6 फुट 7 इंचेस, 6 फुट 7 का बॉलर था सर। और ये उसको खेल रहा था ऐसे जैसे आप कह लें कि ये उसकी लेग्स तक भी नहीं पहुंचता था पूरे का पूरा। तो इसने माशाल्लाह वहां पे 31 नॉट आउट किया और इसको मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला। उनके कोच ने इसको मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया और उसने बताया कि भाई यू हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर इन फ्रंट ऑफ यू, बट इट्स depends on hard work. The only thing he has to continue the hard work. Fitness, hard work, mental strength, ये चीजें बहुत important है। Very good, very good. Thank you very much, Abid and Ahmad. Ahmad, मुझे पता लगा कि सो रहे थे, काफी लेट है। And I wish you all the best for the success in life, and make your dad proud and all of us proud. And we're really proud of you. Okay. Inshallah. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you.